last class we discussed some properties of field and we have taken some examples. Now let's come to another interesting portion which says let f be any field and f dash be any subfield of f. F be any field and f dash be any subfield of f. Let fn that a belongs to f. Now define those two operations. As and alpha dot a1 a2 up to an is equal to alpha a1 alpha a2 alpha an. Here we will observe f and f dash forms a vector space. माने गोटे फील्ड अच्छी एफ डैश होची तार सब फील्ड ताले जदि एफ गोटे फील्ड एफ एन टा कौन हम एन टपल्स a1 a2 an a बिलोंग्स टू एफ दीटा ऑपरेशन डिफाइन कले प्लस आउट डॉट a1 a2 an प्लस b1 b2 अप टू bn a1 b1 a2 b2 a3 b3 n bn और एटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन टा कौन अल्फा डॉट a1 अप टू a1 a2 an इज इक्वल्स टू अल्फा a1 अल्फा a2 अल्फा n एफ एन एफ डैश टा गोटे वेक्टर स्पेस फॉर्म करिवो. एग्जांपल कौन एग्जांपल हो जी आर एन ओवर आर आर एन ओवर क्यू आर एन ओवर सी सी एन ओवर आर सी एन ओवर क्यू ताले एटा दिस विल फॉर्म ए वेक्टर स्पेस दिस आल्सो विल फॉर्म ए वेक्टर स्पेस एटा वेक्टर स्पेस फॉर्म करिवनी दिस आल्सो एटा काहे करिवनी रीजन सी इज नॉट ए सबफील्ड of R. सीटा R रा गोटे सबफील्ड नुहे दैट्स व्हाई दिस विल नॉट फॉर्म ए वेक्टर स्पेस किंतु एठी समस्ते देख R टा R रा सबफील्ड Q टा R रा सबफील्ड R टा C रा सबफील्ड Q टा C रा सबफील्ड तेणु तांकर जहार सबफील्ड ये जहार सबफील्ड तार n टपल वाला जो ग्रुप टा Rn Cn एमाने समस्ते गोटे गोटे वेक्टर स्पेस फॉर्म करिवे. आ गोटे let f be any field and f dash be any subfield of f. Let f an a denotation टा होची set of all the sequence where the sequence are come from the field f an होची an such that an ais are from the field. एटी सेमती डिफाइन करिबा those two operations define plus and dot on f of n as and
is equals to alpha n for all alpha belongs to f dash and for all n comma bn belongs to f an माने एठी आम एठी ट्रीट करछे एफ डैश टाकू गोटे स्केलर फील्ड भलिया आउ एफ आउ नॉन एम्प्टी सेट टाकू आम एफ एन हिसाब रे आम डिनोट करछे केमती ना एठी एन और बी एन आंकर जोटा एडिशन टा इंटरनल कंपोजिशन टा ए हिसाब रे डिफाइंड हिची आ अल्फा डॉट एन टा होजी अल्फा एन जोठी कि अल्फा टा एफ डैश रु आछि आ एन बी एन ए माने एफ एन रु आछंती है कि ताले एठी हियर f of n f dash forms a vector space एटी वेक्टर स्पेस फॉर्म करिवो fn एटा एग्जांपल नबा एग्जांपल कोन rn ओवर r वेक्टर स्पेस फॉर्म करिवो आमे बस बेसिकली आमे एमती देखिबा जे एठी r टा r सब फील्ड निजेर सब फील्ड देखा जायछि f डैश भी एनी सब फील्ड ऑफ f ताले f ऑफ n एटी f जदि हम r को नेबी of n set of all the sequences where the sequence are from field एटी फील्ड होची r तो ये होची जदि हम देखिबा तापर आउटे कथा प्रत्येक आमे लास्ट क्लास रे सेटा पढिथिले जे प्रत्येक फील्ड तार सब फील्ड ऊपर गोटे वेक्टर स्पेस फॉर्म करे आमे जस्ट एटा तार गोटे एडवांस फॉर्म बोली आमे भाबिबा सेमती जेमती एठी आमे देखथिले से भलिया cn ओवर r एटा वेक्टर स्पेस फॉर्म करिवो आ कोन rn ओवर q एटा फॉर्म करिवो सेमती किंतु सेमती लास्ट एग्जांपल देखिले rn ओवर c एटा फॉर्म करिवोनी क्लियर now let's come to another portion let f be any field and f dash be any subfield of f let fx एटा कौन ना px where px is a polynomial where the coefficients belongs to f माने fx टा होची सही सेट जो थरे सब पॉलिनोमियल माने अछंती आ पॉलिनोमियल जो कोएफिशिएंट हम पॉलिनोमियल को केमति रिप्रेजेंट करो a1 a1 a0 a1x a2x स्क्वायर ये जो कोएफिशिएंट गुडा दीज आर ऑल कम फ्रॉम द फील्ड एमति सेमति डिफाइन करिबा डिफाइन प्लस एंड डॉट ऑन fx consider it as the non-empty set consider the field f dash as the field where f dash is subfield of f and we see f of fx over f dash will form a vector space define plus and dot on fx as px plus qx normal addition and alpha dot px होची alpha dot a0 a1x an x to the power n is equal to alpha a naught alpha a1x alpha an x to the power n for all alpha belongs to f dash and for all px comma qx belongs to
f of x. Here we see fx f dash forms a vector space. Example, rx over r এটা ଗୋଟେ qx over q, qx over r টা হবো কি? This will not form because it is not a subfield of q. R is not a subfield of q, that's why it will not form. Zpx over Zp, these all will form a vector space. এটা जो पढ़ी आम इंटीजर्स मॉडल n where n माने आम Zp देछि এটা प्राइम नबा आम माने एठी n जदि प्राइम हे गला तो हम Zp हिसाब रे रिप्रेजेंट करि परिबा. Another portion, these all are forms whatever we studied in today's class. From the very beginning, these all are forms of vector spaces. How can we represent a vector space? There are several ways by which we represent vector space, and आम देखीचे बेले बेले कन्फ्यूजन आसे एटा हम कि नहीं, माने जदि आम ताको फॉर्मेट रे भांगी भांगी चलिबा ताले this will become very easy to understand which will form or which will not. Let f be any field and f dash be any subfield of f. f what a field और f dash होची any subfield of f. Let f n cross m is equals to aij, where aij belongs to f. This is the set of matrix where the element of the matrix come from the field and the matrix is of the order n cross m, n rows m columns. Define plus and dot on f n cross m as aij plus bij is equals to aij plus bij n cross m. माने n can be equal to m also. एठी हमें कौन देखो माने एठी जो हमें एडिशन टा को एठी डिफाइन करले इंटरनल कंपोजिशन टा को जदी ये गोटे मैट्रिक्स ये गोटे मैट्रिक्स आर प्लस हेले ना सीधा धर आर फर्स्ट एलिमेंट से तो आर फर्स्ट एलिमेंट को प्लस करबा, ये जो मैट्रिक्स पेबा तार फर्स्ट एलिमेंट जगह ही लिखिबा, ये होची से प्रकार एडिशन जोटा कि नॉर्मल मैट्रिक्स एडिशन. एंड अल्फा डॉट aij n cross m is equals to alpha eij n cross m for all eij bij belongs to f n cross m. अगर समस्त ऑर्डर n cross m and for all alpha belongs to f. Here also f n cross m f dash forms a vector space. Examples कौन जदि मु कहिबी r2 cross 3 over r3 cross 3 over r एटा गोटे वेक्टर स्पेस फॉर्म करिवो, एटा फॉर्म करिवो c2 cross 3 over c2 cross 3 over q, ये भी but q2 cross 3 over r will not form because एटा r subfield नुहे, that's why. So
subspace. What is a subspace? Let VF be any vector space and W not equal to phi be a subset of V. VF be any vector space and W not equal to phi means W is a non-empty subset of V. Then W is said to be a subspace of V if W itself forms a vector space over the same field F. माने जो फील्ड उपरे वेक्टर स्पेस टा हमर से नॉन एम्प्टी सेट टा वेक्टर स्पेस फॉर्म करूची से फील्ड उपरे से नॉन एम्प्टी सेट रा गोटे सबसेट जे निजे गोटे वेक्टर स्पेस हिथिबो जदी वेक्टर स्पेस फॉर्म कला से फील्ड उपरे ताले हम ताकू तार सबस्पेस बोली कहिबा किछटा सबस्पेस रा टेस्ट भी अछि सी सबस्पेस टेस्ट let VF be any vector space and W not equal to phi be a subset of V, then W will be a subspace of V if for all alpha belongs to F and for all UV belongs to W दीटा कंडीशन सैटिस्फाई करथिबो कोन कोन गोटे होची U plus V ये W भीतर रहउथिबो आ गोटे होची अल्फा U ये W भीतर रहउथिबो जदी ये दीटा कंडीशन को सैटिस्फाई कर देला ताले हमें कहिबा जे नॉन एम्प्टी सेट टा W टा V रो गोटे सबस्पेस बोली लो आसीबो U V टा सब बेले दैट नॉन एम्प्टी सेट ओके केमते प्रूव करिया लेट U belongs to W now take in particular alpha equal to -1 then alpha dot U is equal to alpha U equal to -1 into U is equal to minus U W. Hence, for all U belongs to W, minus U belongs to W. Inverse. In particular, take V as minus U, which belongs to W. Now, U plus V belongs to W. U plus V belongs to W implies U plus minus U belongs to W implies 0 belongs to W. Identity. Now W plus এটা ଗୋଟେ abelian group form करदबो केमती आमे देख जानले कोन आइडेंटिटी एग्जिस्ट कला इनवर्स एग्जिस्ट करूची आ दुईटा रहला क्लोज आ ये कोन associativity obviously hold करियो because it is a subset of that group subset of that non empty set as W subset of V so आमे जो प्रॉपर्टी चारटा पढिथिले जेमति कि फर्स्ट प्रॉपर्टी थिला W plus इज abelian group सेकंड प्रॉपर्टी जोडा कोन अल्फा प्लस बीटा डॉट V जोडा सब आमे पढुथिले तार प्रॉपर्टी गुडा जोडा स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ इंटरनल कंपोजिशन मिसी जो थिला चारटा प्रॉपर्टी तो जेहेतु ये सबसेट तार से प्रॉपर्टी गुडा को से ऑटोमेटिक सैटिस्फाई करि दबो
are satisfied. So W is a subspace of V. Conversely, let W is a subspace of V. Implies W is also a vector space. Then যেহেতু ভেক্টর স্পেস ক্লোজ भी হব, স্কেলার মল্টিপ্লিকেশনটাকে भी satisfy করিব। এটা actually আমি যে পড়লে এটা হচ্ছে 2 স্টেপ টেস্ট। গ্রুপ থিওরি সেটা আমি পড়িবা 2 স্টেপ টেস্ট। ଆଉ ଗୋଟେ 1 স্টেপ টেস্ট ବି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଭଲ, ସେଇଟା ମାନେ ଇଜି କହିବାକୁ ଗଲେ। और सबस्पेस को हमें केमिति टेस्ट करि पारिबा सेटा होची W is a subspace of V if and only if alpha dot U plus beta dot V belongs to W for all alpha beta belongs to W F and for all UV belongs to W. Okay, so that's it for your today's class. In the next class we will do some examples on subspace. That's where we see which non-empty set are considered to be a subspace of the respected vector space, and then we'll go forward. Okay, thank you.